Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to study about one of the most fascinating and rapidly growing fields in modern science, that is microbiome engineering. It is a very beautiful yet innovative topic and it's an emerging trend. So we are going to study about how what is microbiome engineering, how it is done, how it is benefiting us, and what are the future trends, all in all of that. Okay, so before proceeding towards the video, I just want to request to you all to please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want any particular topic of your choice to be explained by me, please do let me know below in the comments section. Okay, so well, we are going to learn how scientists are not only studying microbes but also designing and reprogramming microbial communities to improve human health, revolutionize agriculture, clean our environment, and that's how they are supporting space exploration. Okay, so stay tuned till the end because today it's a very beautiful presentation. Okay, so introduction to microbiome. So see, the word microbiome refers to the complete community of microorganisms, okay, starting from a simplest kind of microorganisms to the complex kind of microorganism. So all of the microorganisms spans across the universe are collectively termed as microbiome. Okay, so they include bacteria, they include viruses, they include fungi, archaea, and even small protists. Okay. They also include, the symbiotic association microorganisms. वो वाले भी included हैं जो दूसरे organisms के साथ symbiotic association में या environment के साथ symbiotic association में रहते हैं, वो सब भी included हैं. So for example, humans alone, मतलब हमारा जो ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन अलोन आर होस्ट टू ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स. You won't believe that our body is a home to about trillions of microbes, most of which are not harmful but essential for our survival. Okay, so microbial cells in our body actually outnumber human cells. इतने microbial cells हैं हमारे body में कि वो human cells को भी outnumber कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा है. So in 2007 there was this project known termed as Human Microbiome Project. So it was launched to identify and characterize the microbes living in and on the human body. So the project, after several years, it came to the notice that microbes influence our digestion, immunity, metabolism, and even mental health deeply. Okay, very deeply. Microbes are very important for our survival because they are impacting the major processes done in our body. So the microbiome project, or the microbiome, is just is not just a side character in our biology. It is central, it is important for our lives, it is crucial to our lives. Okay, so as I said, key roles in health, disease and ecosystems ये समझ में आया जब हमने वो प्रोजेक्ट करा. Composition of microbiomes. Microbiomes are omnipotent. They exist everywhere. Everywhere means everywhere. On the skin, in the air, everywhere. You just name it and you'll find a microbe there. In the harshest condition, microbes have the capability to survive. Okay. So there are some like these are some examples. So composition of microbiomes, as I said, they are omnipotent. They exist everywhere. So in the gut, microbes, break down complex carbohydrates. They produce vitamins. They regulate immune responses. So in the gut, they are present. They are present on our skin. Microbes, are the protective shield against, harmful pathogens. So microbes are very important because they are present in, present on our skin as a barrier to the pathogens. And in the oral cavity, microbes are present. They are present to maintain the balance and prevent infections. Okay. Beyond humans,
The microbes has a wide presence in soil. They are needed in the soil for the nutrient cycling and plant growth. In the oceans, microbial communities regulate global carbon and oxygen cycles. I have already made a video on nitrogen cycle and carbon cycle. So ये बहुत ही important होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे आर रेगुलेटिंग. अगर मैं लीमन टर्म्स में कहूँ तो आई थिंक सब कुछ रेगुलेट कर रहे हैं. सी स्किन पे हैं, दे आर प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस, दे आर प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी, दे आर एक्टिंग एज अ बैरियर. गट में वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं. ओरल कैविटी में दे आर प्रेजेंट इन प्रिवेंट द इन्फेक्शंस अगेन. Apart from humans, they have the they are needed in the soil for the digestion process. For the plants they need it. So ओशियन के अंदर वो साइकिल्स को रेगुलेट करने का काम वो करते हैं. सो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं माइक्रोब्स के. सो दे आर वेरी क्रूशियल फॉर अस because we can, if study in a proper manner, it can be useful for us in the longer run. So every niche on earth has its own unique microbial fingerprint. Every niche, literally every niche on earth has its own unique microbial fingerprint. So this incredible diversity is what makes microbiome engineering both a challenge and an opportunity. Challenge because उतना complexity को study करना और उतनी complexity को समझना, that's a challenge. And opportunity is again इतना diversify है सब कुछ कि we can use it as a opportunity for various applications. Okay. Moving forward to what is the significance of these microbiomes? Why are they important? So for human health, they are important because they helps in digestion. They produce vital metabolites. जैसे मैंने आपको बताया vitamin produce करते हैं. They also protect us against infections. They train our immune system. Disturbances in the microbiome in our body are linked to obesity, are linked to diseases such as diabetes, cancer and even neurological disorders. तो वो माइक्रोबायोम का जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होना चाहिए, वो डिस्ट्रप्शन नहीं होना चाहिए. एनवायरनमेंट के लिए माइक्रोबायोम का सिग्निफिकेंस समझा जाए तो दे रेगुलेट न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल. दे रेगुलेट ऑल दीज साइकिल्स. दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर एंड हेल्प इकोसिस्टम्स रिमेन स्टेबल. और इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी में माइक्रोब्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज इन फर्मेंटेशन. आई थिंक आप सबको पता होगा यीस्ट जो हमारा बेकिंग इंडस्ट्री में कितने ज़्यादा यूज़ होता है. सो माइक्रोब्स बेकिंग इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी के लिए बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं. माइक्रोबायोलॉजी तो इज़ स्टडी ऑफ माइक्रोब्स ओनली. सो हर जगह माइक्रोब्स का बहुत ज़्यादा क्रूशियल फंक्शन जो है वो देखने को मिलता है. Now what is microbiome engineering? हम microbiome तो समझते हैं, they are omnipotent, they are present everywhere, they have huge applications, they have huge diversity and they are very adaptive because they can adapt to any surrounding. So ये सब चीज़ें, but like what is microbiome engineering? So now that we know how important microbiomes are, let's define microbiome engineering. So see, it is the deliberate manipulation and design of microbial communities to achieve desired outcomes. Engineering means we do trial and error to understand what part of microbes is good for us and we can take it from microorganisms. So जो मैनिपुलेशन किया जाता है माइक्रोबियल कम्युनिटीज में. अब मैनिपुलेशन मीन्स व्हाट? नाउ इट कैन बी डन इन द जेनेटिक सिस्टम, इट कैन बी डन इन द आउटर मशीनरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. दे कैन बी यूज्ड एज carrier to something, or the applications are wide. So वो जो मैनिपुलेशन इस तरीके से होता है जहाँ हम अपना जो हमें गोल है, हमारा जो हम आउटकम चाहते हैं उसके लिए हम फोकस्ड मैनिपुलेशन जब किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का करें एंड बेनिफिशियल आउटकम अगर हमें मिले, दैट इज नथिंग बट माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग. So the goal is to improve human health. इसके लिए हम इसे यूज करना चाहते हैं. We want to improve the yield of our agriculture, of our plants, of our crops.
वी वांट टू रिस्टोर इकोसिस्टम। रिस्टोर इकोसिस्टम मतलब सी कार्बन, जैसे कि आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से एंड ऑल ऑफ दीज साइकिल्स जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती जा रही है, बिकॉज प्लांट्स डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत कम हो चुका है। उस वजह से वो इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को रिस्टोर करने में हमें ये हेल्प कर सकते हैं, न्यू न्यू थेरेपीज, न्यू टेक्नोलॉजीज बनाने में ये हेल्प कर सकते हैं। तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट goals. The goals are vast, as I said, the goals are wide. They can be used for so many purposes. In other words, I would say, instead of letting microorganisms just do their thing, scientists are now learning to guide, edit and reprogram them. So if we reprogram the microbes, they can function in a manner that is beneficial for us, right? सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नथिंग बट माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग. नाउ व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दैट आर यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग? So to engineer microbiomes, we need powerful tools such as CRISPR-Cas systems. CRISPR-Cas systems molecular scissors होती हैं which allow us to precisely edit microbial genomes. Microbial genomes को edit करने के लिए, because मैंने जब बोला deliberate manipulation हम करेंगे तो वो mainly उनके genome system में होगा ताकि वो हमारे तरीके से function करें. तो वो अगर हमें जीनोम में उनके इंटरफेयर करना है, सो वी नीड मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूल को काटने के लिए जो सीजर्स यूज होती है, विच इज CRISPR-Cas systems. Synthetic biology is also another tool or technology, I would say, because it lets us build entire metabolic pathways and even create synthetic microorganisms. हम synthetic biology की मदद से synthetic organism बना सकते हैं, synthetic microorganism बना सकते हैं, and then we can use that particular microorganism for our benefit. So वो synthetic biology कहीं ना कहीं helpful है. Metagenomics and single cell sequencing. This metagenomics and single cell sequencing helps us study the entire microbial communities without the need to culture them in the lab. हमें lab में कल्चर करना नहीं पड़ता है, and single cell sequencing की मदद से हम पूरी स्टडी कर सकते हैं माइक्रोब्स की, माइक्रोबियल जीनोम्स की, माइक्रोबियल किस तरीके से फंक्शन करता है उस चीज़ की, एंड इफ़ वी स्टडी इट इन अ मैनर तो हमें उससे समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से उसमें क्या इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या क्या रिमूव कर सकते हैं टू let that micro function in our way. Okay, moving forward, next is artificial intelligence and bioinformatics for microbiome prediction and modeling. See, microbiome को remodel कराने के लिए या फिर उनको हमारे जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसे यूज करने के लिए artificial intelligence and machine learning is definitely great, because fast and immediate वो process हो सकता है, and that can help us to like these computational tools can help us predict how microbial communities will behave when they are altered. Like before altering them, we can study how they will behave if they so ये हमारा टाइम बचाता है कहीं ना कहीं, because we can study before doing it. So if we understand it that it is helping us in a longer run, that we can do it. If it is not helping us in the longer run, we won't do it. So it is artificial intelligence and machine learning is definitely saving our time and helping us. Okay, also artificial intelligence and bioinformatic tools can help us in a way कि किस तरीके से हम उसे इंजीनियर करें so that हमारे को वो आउटकम मिले जो हमें चाहिए. So there are wide variety of options, wide variety of applications for microbiome engineering. As I said, the potential is vast. So it depends. It also somewhere so it depends on the researcher or the scientist how the person or the researcher is using the technology to train the microbes. Moving forward to what are the approaches to engineer the microbiome. So see, there are four main strategies for microbiome engineering. First is microbial consortia design. Microbial consortia design
क्या कहती है, उसमें हम क्या करते हैं. सो वी assemble group of microbes with complementary functions और we allow them to work together. वी असेंबल, ऐसे हम माइक्रोब्स को असेंबल करते हैं, एक साथ लेके आते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के फंक्शन करेंगे या वर्क करेंगे. उन माइक्रोब्स को साथ में लाके वी लेट देम वर्क टुगेदर. सो दिस इज वन फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग, जब हम ऐसे माइक्रोब्स को साथ ला रहे हैं जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे. सो उससे हमारे को जो आउटकम चाहिए वो हमें फास्ट मिल सकता है, बिकॉज दे आर वर्किंग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. सो वी ट्राई टू असेंबल देम एंड वी let them work together. ओके. जीन एडिटिंग इन माइक्रोब्स, जीन एडिटिंग हम डायरेक्टली उनका जो जीनोम है उसमें से जीन्स ऑल्टर करेंगे इंडिविजुअल स्पीशीज में, उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए. नाउ दैट विल वेरी, choice to choice or function to function, or what do you want to do with that microorganism, how do you want to change their behavior, that will vary. What gene sequence you want to alter. Okay. Synthetic probiotics. So designing probiotic strains with the specific therapeutic properties go beyond traditional probiotics. Designing probiotic strains with specific therapeutic properties. हम स्पेसिफिक थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज के साथ एक सिंथेटिक प्रोबायोटिक बना सकते हैं. प्रोबायोटिक क्या होते हैं, जो ये माइक्रोब्स होते हैं हमारे गट में जाते हैं, हमारे गट में जो ये माइक्रोब्स हेल्प करते हैं, वो ही हम सिंथेटिकली अगर डेवलप करें, हम सिंथेटिकली प्रोबायोटिक्स बनाएं, विच आर अवेलेबल in the market. Their probiotics are easily available. So how did they manufacture? So they basically engineered the microbe synthetically to develop a probiotic which functions or which resembles with the gut microbes. जो गट में हमारे माइक्रोब्स होते हैं, जो फंक्शन करते हैं, गट के लिए जो काम करते हैं, डाइजेशन या वाइटामिन्स प्रोड्यूस करने का जो काम करते हैं, वही हमें सिंथेटिक प्रोबायोटिक से मिलता है. सो सिंथेटिक प्रोबायोटिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग. ओके. देन फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन और एब्रिविएटेड एज FMT. So transferring entire microbial communities from a healthy individual to restore balance in patients. हम कोई हेल्दी पेशेंट में से इंटायर उसका जो माइक्रोबियल कम्युनिटी है वो हम उस डिजीज इंडिविजुअल या जो भी है उसको हम अगर दे दें एक हेल्दी इंडिविजुअल से, हम पेशेंट में वो बैलेंस रिस्टोर करने के लिए ट्रांसफर कर दें. सो दैट कैन रिस्टोर द बैलेंस, बिकॉज एज आई सेड माइक्रोब्स बहुत ह्यूज प्रोसेसेस में मदद करते हैं एंड उनका डिसरप्शन या उनका इम्बैलेंस ही कहीं ना कहीं डिजीज कॉज करता है. एंड द डिजीज कैन go from simplest to complex, as I said, neurological disorders or cancer. So वो चीज़ अगर वो transplantation हो जाए तो that can also help, or that is also a form of microbiome engineering. Okay, so now each of these approaches can be tailored depending on the goal, whether it is medical, agricultural or environmental. Okay, so depending on that it can be altered depending on the requirement. Now, what are the applications in human health? So, in medicine, microbiome engineering is already showing enormous potential. Okay. So, in the gut, engineered probiotics are being designed to produce anti-inflammatory compounds or neutralize harmful metabolites. gut जो होता है, gut के अंदर जो engineered probiotics होते हैं वो anti-inflammatory compounds को synthesize करते हैं, synthetic probiotics, and that's how they neutralize harmful metabolites. Okay, obesity and diabetes में ट्रीटमेंट के लिए काम आते हैं. अगर हम माइक्रोबायोम मैनिपुलेशन कर दें तो माइक्रोबायोम मैनिपुलेशन कैन रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म एंड इम्प्रूव द इंसुलिन सेंसिटिविटी. तो वो कहीं ना कहीं डायबिटीज को हेल्प कर सकता है. कैंसर थेरेपी में माइक्रोब्स को इंजीनियर्ड करके हम अगर उससे इम्यून सिस्टम किसी का बूस्ट करवाएं, ऐसे माइक्रोब्स को इंजीनियर करें जिससे इम्यून सिस्टम बूस्ट हो, तो उसके लिए इम्यूनोथेरेपी और ये सारे ट्रीटमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाए जा सकते हैं. फ्यूचर में पर्सनलाइज्ड माइक्रोबायोम बेस्ड थेरेपीज डेफिनेटली आने के चांसेस हैं. देयर आर रिसर्चेस ऑनगोइंग, बट अभी नहीं है हमारे पास. बट इन दी टाइम टू कम, इन दी अपकमिंग ईयर्स, वी आर डेफिनेटली होपिंग वी विल सी पर्सनलाइज्ड माइक्रोबायोम बेस्ड थेरेपीज, जहाँ पर एक इंडिविजुअल की पर्सनल प्रॉब्लम के अगेंस्ट थेरेपीज क्रिएट की जा सकती होंगी. ठीक है.
Okay, what are the applications in agriculture? Agriculture में क्या है? So they are very critical in agriculture also. So by engineering soil microbiomes, अगर हम soil microbiomes को engineer करें, हम nutrient availability को बढ़ा सकते हैं plants के लिए. We can reduce the need for chemical fertilizers because अब प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. प्लांट ग्रोथ को हम प्रमोट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. रिजिलियंस, प्लांट को हम रिजिलियंट बना सकते हैं ड्रॉट या फिर कोई भी ऐसी फ्लड, ऐसी सॉइल कंडीशंस के लिए. प्लांट पैथोजेंस एंड पेस्ट्स को हम नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल माइक्रोबायोम्स को इंजीनियर करके. पेस्टिसाइड यूज रिड्यूस कर सकते हैं. सो ये सब फैक्टर्स अगर हमने कहीं ना कहीं कर दिए तो दिस विल इंक्रीज द क्रॉप यील्ड एंड दिस विल ऑल्सो मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल, विच इज अ अर्जेंट नीड, you know, for our growing population. Okay. Now, what are the application in the environment? So, engineered, अगर हम microbiomes को engineer करें in a way that can perform bioremediation. Bioremediation क्या होता है? ऑयल स्पिल्स क्लीन हो जाएं, पॉल्यूटेंट्स क्लीन हो जाएं, प्लास्टिक वेस्ट क्लीन हो जाए, टॉक्सिक केमिकल्स क्लीन हो जाएं, ये सबको अगर वो क्लीन कर सके. बायोरिमीडिएशन इज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से बनाएं कि पॉल्यूटेंट्स रिमूव हो जाएं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन हो सके कार्बन साइकिलिंग से. कार्बन साइकिल आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन इट, यू कैन प्लीज वॉच फॉर अ डिटेल्ड वर्जन. बट कार्बन साइकिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोबायोम्स कैन हेल्प मिटिगेट क्लाइमेट चेंज. कार्बन कैप्चर को वो बढ़ा देंगे. कार्बन कैप्चर अगर बढ़ जाएगा एनवायरनमेंट में तो ग्रीन हाउस गैसेज रेगुलेट होगी. अगर ग्रीन हाउस गैसेज रेगुलेट होगी तो क्लाइमेट ऑलरेडी नॉर्मल फंक्शन करने लगेगा. रिस्टोरेशन ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ओशन के अंदर माइक्रोबायोम इंटरवेंशंस कोरल रीफ को रिस्टोर कर सकती है, मरीन इकोसिस्टम को रिस्टोर कर सकती है जो कि पॉल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं डैमेज हो चुके हैं. सो वो मरीन इकोसिस्टम को भी रिस्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. ओके. इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. सो इंडस्ट्री में I would say they are the hidden workforce in the industries. Fermentation में engineered microbes can produce new foods, beverages, bioproducts नए नए बनाया जा सकता है. बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए माइक्रोब्स जो हैं कैन कन्वर्ट बायोमास इनटू क्लीन एनर्जी सोर्सेज. तो जितने ज़्यादा माइक्रोब्स हैं उतने ज़्यादा बायोमास को आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू क्लीन एनर्जी सोर्सेज. फार्मास्यूटिकल के लिए engineered microbes can produce antibiotic, vaccines and therapeutic compounds. Researchers are even creating novel biomaterials like microbial leather or bioplastics जिससे हम animals को कहीं ना कहीं use करना रोक सकते हैं. Moving forward to ethical and safety concerns. Now, see, but with as great power comes, great responsibility definitely comes. Microbiome engineering, have raised serious ethical and safety concerns because see there are biosafety risks since engineered microbes could escape into the wild and cause unintended consequences. जैसे कि pandemics, epidemics होते हैं जहाँ पर microbes जो हैं वो बाहर कोई डिजीज कॉज कर सकते हैं, कोई आउटब्रेक कॉज कर सकते हैं. सो वो एक रिस्क है माइक्रोब्स के साथ काम करने में. इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आर अनप्रिडिक्टेबल. चेंजिंग वन माइक्रोबियल कम्युनिटी माइट डिस्टर्ब द एंटायर इकोसिस्टम बिकॉज हम एक माइक्रोबियल कम्युनिटी को हम अगर चेंज करते हैं तो वी डोंट नो because microbes are so crucial. Maybe it is possible कि एक microbe को change करने की वजह से entire community या entire ecosystem पर disruption या impact पड़े. Ethical debates भी हैं that should we be allowed to edit the human microbiome on such a deep level or not. करना चाहिए या नहीं करना चाहिए human microbiome को, क्योंकि in the longer run human microbiome को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए because we are very much dependent on microbiomes. Okay, so there are ethical concerns. We need strong global regulations to ensure this technology is used responsibly. The potential is enormous, I am again saying, but the caution is definitely essential. Okay, now what are the future prospects or future trends of microbiome bioengineering? So
So see, we will likely see the personalized medicine coming into the market, where the therapies will be altered or tailored to each individual's microbiome, like based on each individual's microbiome. Engineered probiotics could become as common as daily supplements. जो probiotics अभी भी मिलते हैं, but synthetic probiotics वो daily supplements जैसे हो जाएंगे in the time to come. Space exploration में scientists are even considering microbiome engineering for astronauts to maintain their health in long term मिशंस. जब लॉन्ग टर्म पे जाते हैं, वहाँ फूड नहीं होता, ये नहीं होता, सो उसके लिए भी कहीं ना कहीं माइक्रोबायोम कैन हेल्प. एंड इन सस्टेनेबिलिटी, microbiome interventions could become key to restoring balance to Earth's ecosystems. Okay. Now, what are the summaries and key takeaways? So to summarize, microbiomes are very essential for human health, agriculture, industry, in the environment. They allow us to design and reprogram microbial communities for beneficial purposes. माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग हमें अलाउ करता है कि हम नई नई चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, नए नए इंजीनियरिंग कर सकते हैं, जिससे हमें हेल्प मिल सकती है इनटू वेरियस इंडस्ट्रीज़. एप्लीकेशंस वास्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर फील्ड में एप्लीकेशंस हैं. प्रिसीजन माइक्रोबायोम इंजीनियरिंग is definitely an emerging trend and is going to be a normal thing in the time to come. Okay, so that was about it. I hope you enjoyed the video. Please do like, comment, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. If you have any doubts, please do ask in the comment section below. And yeah, we will meet in the next video. Thank you. Bye bye. Take care.